Should I introduce myself? Yes. So you have to ask the question. Hi, I'm Varun Grover and I'm here to do a very quick screenwriting masterclass. I get my ideas from the world around me, from the books I read, from people I interact with, mostly from real life, not from my imagination. I interact with a lot of people, I travel a lot, I read a lot, I watch a lot of cinema, but mostly cinema is more for learning the craft and meeting people, traveling the world, traveling different cities. I always make it a point to walk a न्यू सिटी आई गो टू. कितना भी खराब बॉम्बे जैसा शहर हो जहाँ पे चलने की जगह नहीं, वहाँ भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चलूँ. चलेंगे तो आपको लोग दिखेंगे, आप उनसे बातें करेंगे, आप उनसे बातें करेंगे तो आप कुछ सीखेंगे, आप एक नया किरदार ढूंढेंगे, नई कहानियाँ ढूंढेंगे. अगर कोई कमाल का आइडिया आता है और उसके बाद समझ नहीं आता कि उस आइडिया का क्या किया जाए, तो मैं 2-3 चीज़ें करता हूँ. एक तो आई गो मल्टी डिसिप्लिनरी, which is one way to be a better writer. I always feel कि अगर आपको बहुत सारे disciplines की knowledge है, अगर आप बहुत सारी चीज़ों में interest रखते हैं, being a writer, as they say, is being many people apart from being a writer. तो आप हो सकता है आप डॉक्टर भी हों, आप बॉटनिस्ट भी हो सकते हैं, आप शेफ भी हो सकते हैं, आप फोटोग्राफर हो सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें आपको होना पड़ता है. सो व्हेन आई गेट स्टक विद एन आइडिया विच आई नो इज़ अ गुड आइडिया बट आई डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, I actually approach it from a very different angle, sometimes from the angle of a mathematician, how a mathematician would react to an idea like this, or how a poet would react to an idea like this, and then try to find my way through these other disciplines of interpreting the same idea. So for me, a short story is about a fantastic idea in a classical sense, something which has a setup and a punchline. जैसा कि हमारे स्टैंड अप कॉमेडी में होता है. तो शॉर्ट स्टोरी में पंच लाइन बहुत ज़रूरी है. वॉट आर यू डूइंग विद दैट आइडिया, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर नॉवल, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर अ नॉवेला और लॉन्ग फॉर्म स्टोरी, जिसमें कि कैरेक्टर और कैरेक्टर की जर्नी और स्टोरी का मूड, उस दुनिया की आप कितनी समझ रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है. बट इन अ शॉर्ट स्टोरी व्हाट मैटर्स is, you know, the twist in the end. For me at least, it has to give me something very quickly and still very innovatively. So for me, a short story works only if I have a great punchline to a great setup, and I try to crack both, otherwise there is no story. Lyrics writing for me is something which I learned growing up listening to a lot of Hindi film songs. तो मेरे लिए हिंदी फिल्म के जो पुराने गाने हैं 50s, 60s, 70s, 80s, 90s के दौर के, वो मेरा एक तरह का स्कूल है. और उनमें जो मैंने सीखा है वो बहुत ज़रूरी चीज़ एक है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत बड़ी होनी चाहिए. दूसरी चीज़ सीखी है कि यू हैव टू हैव अ नॉलेज ऑफ म्यूज़िक. इवन इफ you can't play music, you have to have a knowledge of the meter, ताल और सुर और इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए, तभी आप कोई शब्द को उस लाइन में बिठा पाएंगे. लिरिक्स राइटिंग इज़ अ वेरी वेरी mathematical craft also for me, because you have to have the understanding of time, how, you know, ताल किस तरह से चलता है और वो मीटर में कैसे बैठता है और कौन से शब्द के कितने मीटर हो सकते हैं. जैसे कि एक शब्द है सुबह, अब हिंदी में उसको हम सुबह लिखते हैं, लेकिन हम किसी गाने में उसको सुबह भी कर सकते हैं, किसी गाने में उसको सुबह भी कर सकते हैं, किसी गाने में उसको सुबह भी कर सकते हैं. हाउ यू ब्रेक अ वर्ड टू फिट इट इनटू मीटर, वो बहुत बड़ी ज़रूरत है लिरिक्स राइटिंग की, और मैं उन सब पे बहुत ध्यान देता हूँ. एंड हाउ आई अप्रोच लिरिक्स इज बेसिकली व्हेन आई गेट अ ट्यून, I listen to the tune multiple times, and multiple I mean maybe 100 times. कम से कम 100 बार सुनने के बाद जब वो मेरे दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाती है और जब मुझे उसको दोबारा नहीं सुनना पड़ता है, वो सिर्फ मेरे दिमाग में बज रही होती है, तब मैं एक ड्राफ्ट लिखता हूँ. जो पहला ड्राफ्ट होता है जो बहुत ही रफ सा होता है, विच इज़ ओनली टू गेट द मीटर राइट. कौन से शब्द इसमें बैठेंगे मीटर वाइज, पहले वो आते हैं, फिर वो शब्द रिप्लेस होने शुरू होते हैं विद द एक्चुअल पोएट्री आई वांट टू इंक्लूड इन द सॉन्ग. That is the second step, and then the third step is basically refining it, taking everyone's inputs and all, and then combining that into the final song.
इन अ वे आई थिंक सबसे ज़्यादा पॉपुलर गाना है मेरा लिखा हुआ, जो कि बहुत लोग पहचानते हैं उस गाने से कि अच्छा आपने वो लिखा था, और व्हाटएवर यू नो लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट सम अदर वर्क व्हिच आई हैव डन व्हिच इज आल्सो मे बी पॉपुलर, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट आई हैव रिटन जबरा फैन फॉर फैन, बट या एवरीवन नोज कि मैंने मोह मोह के धागे लिखा है। दिस सॉन्ग वाज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, क्योंकि एक फिल्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे आता है। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इमोशन सॉन्ग, इट्स नॉट अ सिंपल लव सॉन्ग. It's a song where the couple in the film, Ayushmann Khurrana and Bhumi Pednekar, they are fighting and they are not at good terms with each other, and they are still having a moment of slight intimacy on the scooter ride through a winter night in Rishikesh. वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल था लिखना, and the composition which came from Anu Malik and Sharat Kataria, the director, you know, after listening to many tunes, came down to this one tune, and it was a लाइक फकिंग गुड ट्यून. ओके, मेरे मतलब मैंने जब सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया कि ये तो बहुत ही अच्छा कमाल की धुन है, और इस कमाल की धुन पे फिर कुछ बहुत ही मतलब तमीज़ का और वजनदार लिखना पड़ेगा, वरना ये धुन बेकार हो जाएगी. एंड द फिल्म मेकर शरद कटारिया वॉज वेरी होपफुल कि ये कुछ एक अच्छा गाना बन के आएगा, क्योंकि उस फिल्म में एक ही रोमांटिक गाने की यही एक जगह थी. It took me a while to come to this phrase, मोह मोह के धागे. Also, one more small thing, the film is set in Rishikesh, हरिद्वार, and the lingo of the film, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं वो लोग, एकदम खड़ी बोली बोलते हैं. खास करके उस फिल्म की जो हिंदी है, मैं चाहता था कि वही भाषा इस गाने में आए, इसलिए मोह शब्द मेरे दिमाग में आया. नहीं तो प्यार या इश्क या हम बहुत सारे उसके जो सिनोनिम्स हैं प्यार के, हम लोग वो अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करते हैं. मोह एक शब्द है जो बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, और जब भी हुआ है खास करके डायलॉग्स में, वो थोड़ा सा नेगेटिव कनोटेशन में हुआ है. जैसे कि मोह माया इज काइंड ऑफ ग्रीड एंड यू नो थोड़ा सा यू आर स्टक इन द वर्ल्डली ऑर्डर्स, वर्ल्डली अफेयर्स. बट आई न्यू कि मोह जो है वो बहुत प्यारा शब्द है, और उसको हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी इज्जत बख्श सकते हैं, तो इस गाने के जरिए हमने वो किया. एक गाना है मूरा, जो कि गैंग्स ऑफ वासेपुर का, नरभसाओ नहीं मूरा, फ्रस्टियाओ नहीं मूरा. तो ये गाना जो है मैंने वासेपुर में लिखा था, और इसका प्रोसेस ये था कि उस समय हमको एक लोरी टाइप गाना चाहिए था. सॉन्ग दैट काम्स यू डाउन, अ सॉन्ग दैट गिव्स यू होप, अ सॉन्ग दैट गिव्स यू इंस्पिरेशन टू फाइट अनदर डे. फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में वो फैजल की बीवी जो है वो उसको सुनाती है. वी क्रैक्ड दिस आइडिया, मी एंड स्नेहा खानवलकर, दैट वी विल हैव अ सॉन्ग विच इज very ballad like, but with inspirational words and at the same time fun words. तो ये शब्द जो हैं फ्रस्टियाओ और नरभसाओ, ये सब मैंने बनारस में when I was in college in IIT BHU, वहाँ पे मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे आसपास बहुत सारे बिहार के मेरे दोस्त थे, and they used to say अबे फ्रस्टिया कह रहा है. So this combination of Bihari and English I discovered in college, and I was very keen to use this in a song, and I got this opportunity here in Moora. 2-3 है मेरे पास ट्रिक्स. एक तो क्रिएटिव ब्लॉक मुझे लगता है इज मोस्टली इट्स अ स्कैम क्रिएटेड बाय राइटर्स टू जस्ट गेट अ डे ऑफ. यू कैन जस्ट से आज तो भाई दिमाग ही नहीं चल रहा मेरा. होता है कई बार, सच में होता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता है. ज़्यादातर इट्स जस्ट लेजीनेस ऑफ द राइटर और एक्चुअल नीड टू टेक अ ब्रेक. Way to get out of it is actually take a break. You either are faking a creative block or you have a genuine creative block. The thing is, you definitely need a break that you are creating, you're faking something. So take a break. What I do, I take a walk. If it's a deadline also, मान लो deadline है, कल रात को कुछ देना है और आज दिमाग ही नहीं चल रहा है. So basically just I go out, walk. If it's a city which is walkable, if it is a city like Bombay where you can't walk and it's humid outside, you know, May, June चल रहा है और आप नहीं walk कर सकते हैं, you'll faint, and then yeah, there will be another kind of block in addition to creative block. So I just get into a local train. That's one of my तरीका. मैं लोकल ट्रेन में चढ़ जाता हूँ, बोरीवली से चर्च गेट से बोरीवली, बोरीवली से चर्च गेट से बोरीवली. ये 2-3 राउंड मार के 4 घंटे रफली आई जस्ट स्पेंड इन द ट्रेन विद अ बुक, और समटाइम्स विद द म्यूजिक, और समटाइम्स विद अ नोट पैड, विद कुछ रैंडम आइडिया आया वो लिख लिया. So that is one way. You get out of the space which is giving you a creative block. You go out, walk on the road, drive if you can. I don't have a car, plus I don't know how to drive, तो local train ही बचता है मेरे पास बॉम्बे में. और another way is
go play if you love playing, or if you love swimming, if you love, give yourself some rush. I don't know कौन सा serotonin या जो भी होता है, कोई एक chemical होता है ब्रेन में जो कि निकलता है when you exercise, when you play, when you run, go for a run, whatever. So just get your brain some oxygen, some energy, some good chemicals. That is another way. Third way is set some goals. Set some goals in the sense आपको लगता है कि आप ये काम खत्म कर लोगे तो उसके बाद आप ये करोगे. So basically tempt yourself with some treats and all कि अच्छा मैंने ये कल अगर खत्म कर लिया ये काम तो उसके बाद I'll maybe eat Maggi. वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्लस होता है कि अच्छा मैगी खा, because Maggi somehow feels unhealthy. It is probably unhealthy. A lot of doctors will tell you. For me, basically promising myself unhealthy food at the end of it. Somehow it works as well as going out swimming. I don't know how that works, but yeah, both things completely opposite for your body actually work. कि अच्छा मैं ये काम खत्म करूँगा. So giving yourself temptation of a treat, a promise, something, okay, I'll go and have a very unhealthy burger or some deep fried food or Maggi. That helps. So yeah, these are the 3 tricks. I think there's a simple trick. You have to know your weaknesses and their strengths, and not the other way around. Your strengths, you'll know, they'll know probably. But you have to know what you can't do and what they can do way better than you, and work in that space where you are collaborating, knowing each other's strengths and weaknesses so that you can maximize the impact instead of both of you feeling नहीं मेरा ये strong है और मेरा ये strong है और दोनों वही काम करने लगेंगे and it will become a mess. So knowing strengths and weaknesses. Second, being respectful, because no matter how ugly the argument is, and there are lots of arguments because creative people end up fighting on certain things they feel very strongly about, but the thing is, if you are polite in these arguments, there'll be some samjhauta and something good will come out of it, which is what I've seen in all my whatever creative arguments across the years. If you burn the bridges, if you cut off ties, if you are too rude and you end up alienating people, then it just harms the ultimate product, and it of course harms the person also. If you have been rude to them or if they have been rude to you, it harms you. Yeah, you are just creating a story. We are just writing something which is for entertainment, which is for enrichment. Yeah, we are not solving a global crisis. So let's just be aware कि हम लोग कहानियाँ कह रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, नाटक बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं. It's not a matter of life and death. So don't hurt someone because you don't agree with them on some imaginary idea. In many ways, one, stand-up special you're writing alone, and whatever you write will be the final thing. Of course, there is workshopping and all. But a film, even if you write something which you are very sure about, but then there are multiple interpretations of it by the actors, by the cinematographer, by the editor, then by the producers or the marketing team and whoever comes to watch the film to distribute it and all. And then the final interpretation by the audience who might see it in a theater where the sound is not working or the lamp of the projector is thoda sa dull and they miss out on 2 key scenes which are shot in low light. So it can go very wrong, and it's not in your control as a writer. But as a writer, if you are writing a stand-up special and which you are performing, everything you do, you are responsible for it. If the lights or mic are not working on that day, that's on you and you can change it immediately. Second thing, stand-up special, you workshop and you know what is working mostly by the end of it. You have the chance to improve, like over 10 months, 18 months, you are traveling with it and you have a chance to see the reaction and keep improving, keep changing. A film once done is done. Like you have written the script, it has been snatched from you, someone has started making it and then they make it and then the people see it, then the reviews come and you can't do anything. अमृता प्रीतम, उनकी पोइट्री बहुत पसंद है. इसमत चुगताई की राइटिंग बहुत पसंद है. मंटो साहब की राइटिंग बहुत पसंद है. उदय प्रकाश की कहानियाँ, मतलब मेरे लिए दे हैव बीन अ कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड. हाउ एम्बिशियस दे आर, हाउ रूटेड दे आर, हाउ पोइटिक दे आर.
उदय प्रकाश साहब की कहानियाँ, मनोहर श्याम जोशी के novels. Then among English writers, I would say Arundhati Roy, when she wrote God of Small Things, it just opened a completely new world for me. I did not know that a novel like that could exist, which is so funny, so moving, so heartbreaking, so real, so political. That has been a huge influence over the years. जसिंता केरकेटा की पोइट्री बहुत कमाल की लगती है. पोइट्स में गोइंग बैक मिर्ज़ा गालिब से लेकर हाल फिलहाल में अभिषेक शुक्ला हैं, एक लखनऊ के युवा कवि जो मेरे उर्दू टीचर भी हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखा है. Like there is a long list. Stephen King is there, and even people who write pulp kind of fiction, Eric Segal and John Grisham. The first English novels I read were these people, and they were very thrilling and very cheap and very bawdy, and not bawdy in that sense, not vulgar, but just thrilling and fun and cheap thrills वाले. तो बहुत मजा आता था. I mean, if I start writing a list, and actually it will be probably more than 1,000 films which I really love. They are not like 1,000 films I like. 1,000 films which I'm crazy about. Okay, so I don't know उसमें से मैं कितनी बता पाऊंगा quickly, but I'll give you some names. I would actually give you the name of the directors. So every film by Paul Thomas Anderson, every film by Satyajit Ray, almost every film by Agnes Varda, almost every film by Gulzar Sahab. उनके गाने तो पसंद है, लेकिन उनकी फिल्मों में जो सेंसिटिविटी है वो गानों में ठीक है दिखती है, लेकिन वो 2 मिनट के लिए दिखती है या 3 मिनट के लिए, और वो उसमें एक एब्स्ट्रैक्टनेस भी होता है. फिल्म्स आर वेरी डायरेक्ट. ऑलमोस्ट एवरी फिल्म अगेन बाय कोएन ब्रदर्स, ऑलमोस्ट एवरी फिल्म बाय ट्यून डेनिस विलेनोव, ऑलमोस्ट एवरी फिल्म बाय दारेन अरोनोफ्स्की, almost every film by Michael Haneke, almost every film by Sai Paranjpe. Sai Paranjpe is like such a big influence not on cinema, because I'm not probably writing or making that kind of cinema, but as a person, just the simplicity, just the love, just the humor in her cinema is what I want to be. I want to be a Sai Paranjpe film in life. That's what I want to be. And I'm not like going Godard and Fellini and all, which you all know. Tarantino was a big influence early on. There was a time when he was like a superpower, and there was a time when we were like discovering this completely new kind of cinema. Recently, I would say Nagraj Manjule. What power, what storytelling, what craft, sab kamal. Vetrimaran, super powerful. Kumar Raja, super deluxe guy. This is going to go viral with someone saying Kumar Raja super deluxe guy. I called him. I'm so sorry, but yeah, ये सब बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जिनका मैंने बहुत सारा काम देखा है. सो ये थी मेरी लिस्ट ऑफ रेकॉर्ड्स. बहुत सारी चीज़ों के मैंने रेको दे दी है, और कैसे मैं लिखता हूँ वो भी थोड़ा बता दिया है. आप लोग लिखो, बनाओ, कुछ करो, कुछ बढ़िया सी फिल्म बनाओ. इफ दिस इज योर फर्स्ट फिल्म, बेस्ट ऑफ लक. इफ दिस इज योर फर्स्ट स्क्रिप्ट, डबल बेस्ट ऑफ लक. एंड माई फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर इज कमिंग आउट. इट्स कॉल्ड ऑल इंडिया रैंक. इट्स आउट ऑन 23rd Feb 2024, रिलीजिंग थिएट्रिकली ऑल ओवर इंडिया. तो आप लोग जाइए, देखिए. बहुत सारे न्यू कमर्स है, बहुत सारे लोगों की पहली फिल्म है. सिनेमाटोग्राफर अर्चना घांगरेकर की पहली फिल्म है. प्रोडक्शन डिजाइनर प्राची देशपांडे की पहली फिल्म है. म्यूजिक कंपोजर्स मयूख और मोइनाक की पहली हिंदी फिल्म है. मेरी पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर. बोधिसत्व शर्मा और समता सुदीक्षा की पहली फिल्म है एज लीड्स. तो आप ज़रूर जाके देखें. हम बहुत सारे लोग हैं जिनकी पहली फिल्म है. एंड वी नीड योर लव and we need your support. So thank you. Done? Perfect.